इमाय धम्मानुधम्मपटिपन्निया बुद्धं पूजे धम्मं पूजेमि संघं पूजेमि. I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing in accordance with the Dhamma. May this humble offering be accepted. आज शनिवार है, so we have the opportunity to ask questions regarding what we discussed this week, which is mostly इंद्रियों के बारे में चर्चा की हमने. अभी तक 4 की चर्चा हो चुकी है. श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की ताकि ठीक से समझ जाए उनको, क्योंकि उनका महत्व बहुत है हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी और गृहस्थ जीवन में भी. तो इसलिए लगा कि उसकी चर्चा ठीक से करेंगे. कोई भी प्रश्न हो किसी प्रकार का, प्लीज फील फ्री टू आस्क. Sir, I have a basic question कि समाधि जो है वो क्या ध्यानों के रिस्पेक्ट में ही समझाई जाती है? I mean, even if it is, let's say कि ध्यानों के साथ सम्मा जुड़ा हुआ है, somebody is practicing, everything else on the eightfold noble path, then does it amount to samma samadhi, or samma samadhi can be anything other than jhanas also? From a sutta perspective, not the commentaries. फ्रॉम द सुत्ता पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, सम्मा समाधि भगवान ने जहाँ डिफाइन की है, अधिकतर जगह ध्यान के संदर्भ में की है. लेकिन कल परसों आपको शायद याद होगा, हमने चर्चा कल की थी या परसों चर्चा की थी, समाधि के और भी कई सारे विवरण दिए थे. समाधि सुत्त में ही उसमें ध्यानों वाली एक विवरण है, उसके सिवा 3 और विवरण दिए हुए हैं. जो भी एक जैसे आलोक संज्ञा था, लाइट के हिसाब से फोकस करना, वो भी उसी कैटेगरी में आता है. और फिर सती संपजन्य का अभ्यास करना, और देन प्रैक्टिसिंग the 5 khandhas arising and passing away of 5 khandhas, which is primarily a satipatthana practice. तो उसको भी भगवान ने, क्योंकि हम कोई भी साधना करेंगे, सतीपट्ठान करें, हम तो ध्यान नहीं करना चाहते, चल ठीक है, आप इतना तो करना पड़ेगा कि उपचार समाधि हो, चित्त हमारा 5-10-15 मिनट तो टिके एक आलम्बन पे. और फिर हम मान लीजिए हम कहते हैं कि हम बॉडी स्कैन ही करना चाहते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए बॉडी स्कैन. अगर आप सक्सेसफुली करेंगे, विच मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग द बॉडी विदाउट द माइंड गेटिंग अवे, एवरी मोमेंट माइंड गेटिंग अवे, समाधि अपने आप पुष्ट हो जाएगी. क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कंटिन्यूसली ध्यान कर रहे हैं तो समाधि पुष्ट हो जाती है. हम सबका अनुभव है कि जब हम लंबे शिविर पे जाते थे तो समाधि खूब पुष्ट हो जाती थी. So the practice of samadhi is basically samahit chitta. Jhanas are the acme of that, in the sense of having got a deep absorption concentration. So the idea of samma samadhi, that's why, is that it should be associated with other wholesome mental factors. In fact, jhanas can be unwholesome also. The classic example is given of Devadatta. He had all the 8 jhanas perfected, but शील की जो अहम भाव था वो इतना ज़्यादा था that he wanted to. हमने एक सूत्र पढ़ा था ना, महासरोपमा सूत्र, उसमें मैंने चर्चा की थी किस तरह से हम साधक कहीं पे अटक जाता है. मॉन्क बनने पे अटक गया, शील का पालन करने पे अटक गया, समाधि का अभ्यास करने पे अटक गया. और अगर समाधि को ही हम महत्व देने लगेंगे और उसको एक अपनी अटेनमेंट मान के आत्म भाव को पुष्ट करेंगे तो वो मिथ्या हो जाएगा.
तो इट्स नॉट दैट jhana by itself done in any way means samma samadhi. No. सम्मा का डेफिनेशन यही है that it should be done with a base of wholesome चित्ता. जैसे समाधि के जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें शुभ सुत्ता से जो पढ़ा था कि पहले इंद्रिय संवर करेगा, फिर सती संपजन्य के अभ्यास करेगा ताकि कोई दूषित कर्म ना करे, फिर संतुष्टि का अभ्यास करेगा, उसके बाद वो ध्यान का अभ्यास करेगा. सो चित्त की चेतना जो है वो प्राइमरी है सम्मा के लिए. सम्मा समाधि मीन्स डन विद a wholesome state of mind. You're doing sadhana with a wholesome state of mind, and to whatever extent you can concentrate the mind, you can मन की एकाग्रता जितनी हो सकती है उतना करेंगे, क्योंकि एकाग्रता जो है वो सभी चित्तों में रहती है, उसकी इंटेंसिटी की कमी रहती है. उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए ताकि हम मन को एकाग्रता से एक काम में लगा सकें, और वो ऐसे काम में जो कि न्यूट्रल हो, मतलब जो जिसमें हमारी बहुत ज्यादा रुचि ना भी हो, तब भी हम जिसमें भी लगाना चाहें हम मन को उसमें लगा सकें. तो वो सम्मा समाधि हो जब उसका बेस हो रहेगा. बेस ये नहीं रहेगा, बेस कंपटीशन का रहेगा, दूसरे को नीचे दिखाने का रहेगा, मॉनेटरी गेन का रहेगा, then those kinds of samadhis which people can get in various other activities, then that will not be called samma samadhi, because that's not leading to liberation. What is the key thing in all of this? It should not lead to entanglement, it should lead to dispassion, it should lead to nibbida. These are the basic factors. कोई भी एक्टिविटी सम्मा है या नहीं उस बात पर निश्चित करती है. कोई चीज हमको संसार में एंटेंगल कर रही है तो सम्मा नहीं है. कोई हमें डिस्पैशन कर रही है तो उस हिसाब से हमको जो बेसिक क्राइटेरिया हमने वेरी फर्स्ट रिफ्लेक्शन में कहा था, भगवान ने किस आधार पे अलार कलाम और बुद्ध के रामपुत्र के वो जो मेडिटेशन सीखी थी उनको क्यों छोड़ दिया. They don't lead to dispassion, they don't lead to nibbida, they don't lead to non-entanglement. So they are not going to clear the mind, and therefore they are not the path to liberation. तो वो हमको बेसिकली सम्मा का उस सेंस में लेना चाहिए. सर ना फॉलो अप क्वेश्चन कि एक पुथुजन जो लेट्स से राइटफुली प्रैक्टिस कर रहा है और is trying to follow the eightfold noble path in its samma way, तो उसको श्रोतापन अवस्था के लिए फर्स्ट ध्यान रिक्वायर्ड है या he can do without any sort of ध्यान, going to that depth basically? आपको याद होगा मैंने एक सूत्र पढ़ा था जिसमें श्रोतापति कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे ना, जो दठभ सूत्र में उसमें श्रद्धा का दिया था ना. श्रद्धा को कहाँ देखें? Look at it in the characteristics of सोतापन्ना. तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? पहले verified confidence in Buddha, Dhamma, Sangha, and fourth was noble virtues, which means शील विशुद्धि. शील बिल्कुल विशुद्ध है, which means they should be accompanied by sati and sampajanya and panya. So there the jhanas are not mentioned. The point is that one can practice meditation starting with theoretically khanik samadhi according to commentaries, but my practice has been that my own experience has been usse thoda you should have at least a few minutes of ability to hold the mind to the object for a few minutes, 5-10 minutes. You can call it उपचार समाधि. बेसिकली मतलब जो निवरण है वो ना उठे बार बार. So 5 निवरण suppress हो जाए, that's good enough. But when we want to really go and we want to break through, it will naturally happen that our concentration will keep on building up, and the Sotapatti Magga and Sotapatti Phal will happen only when our concentration level matches with that. So it's not necessary that we first practice it and then we do that, but that in the process of systematic practice, अगर हम systematically जैसे कहा जाता है ना, सती पठान में कहते हैं ना, एवं भावे, इस भावना से, इस तरह से, जैसे आपको सिखाया
निरंतरता से, सजगता से, आतापी संपजानो सतीमा विनय लोके, अभिज्ञा, वो सारी कंडीशन जो दी गई हैं उस हिसाब से साधना करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी. And as we approach the stream, concentration will automatically reach the level of first jhana. So I can vouch for it from my experience. It will automatically reach that level. कोई उसमें specifically आपको हेल्प करने की, मतलब कहें कि अब अच्छा मैं ध्यान करना शुरू करूँगा, if you can do it pretty well. But if you purify the mind, because jhanas are also reached by panya. If the mind is purified, अगर आप खुद सोचिए, अगर हमारे सब लोके अनभिरति संज्ञा, सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा, अनत्त संज्ञा, ये अगर पुष्ट हो जाए, तुम्हारा मन कहाँ जाएगा? भटक के जाएगा कहाँ? संसार में ही तो भटकता है, और कहाँ भटकता है? If we realize the futility of trying to set the world right without setting ourselves right first, तो अपने आप सुधर जाएंगे. और आजकल की परिस्थितियां देख के तो यू फील कि संसार को ना ही देखें तो अच्छा, अपने को ही देख लें तो बेटर है, बिकॉज थिंग्स आर सो पैथेटिक. यू नो, इफ यू हैपन टू सी, मैं हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर देखता हूँ, उससे तबीयत ठीक हो जाती है. कल संडे है, कल आएगा तो मुझे मालूम है क्या. सो वी बाइट बिकॉज वी नीड रद्दी फॉर डेली वर्क. So it's a pathetic situation. So if we really are very sensitive to the kind of to the Dhamma, and we understand the need for purity of mind, we will naturally not be attracted towards it. Naturally not. क्या सीरियल देखोगे टीवी का? कौन सा सीरियल देखोगे? It's all idiotic stuff. You will not feel like doing it. Not feel like, because these are all pathetic. There is no value. There is no meaning whatsoever. So naturally, as the mind becomes more and more pure, the attraction of the world naturally drops off. You don't have to force yourself, except in those cases where our attraction remains because of the past sankharas, में जन्मों का हमारा चला आ रहा है ना, अनुशय क्लेश कोई बहुत भारी चला आ रहा है, उस अनुशय के क्लेश के रहते हैं हम चिपक जाते हैं किसी चीज से. So there we have to put some effort and look at it carefully, whether it is, and how we can give it a wholesome twist, you know, or drop it if possible. So that's where effort is needed. Otherwise, as panya increases, as the right view increases, things just drop off. Even associations with such people will drop off. Naturally, it drops off. But one has to be mindful that it is a पॉजिटिव थिंग. कई बार लोग कहते हैं मेरा तो मन ही नहीं करता पुराने दोस्तों में जाने का, तो ये मेरा क्या होगा? नए दोस्त मिलेंगे ना, चिंता की क्या बात है. So you don't have to see it in that sense. So it is a natural process of, natural consequence of purification of mind. Samadhi is also a natural consequence of purification. Thank you, sir. सर, एक सवाल मेरा भी है. जब हम ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कर रहे हैं, हर समाधि में, जैसे अपमान समाधि में हम ब्रह्म विहार का ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, और जहाँ पर लाइट वाला है तो देन देयर इज अ लाइट के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है. तो वी हैव, मतलब जो हमारा ये रहेगा कि हम एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन ले और फिर उसी पे ही काम करते रहे, या अलग अलग समय, जैसे हम जो मेडिटेशन होता है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं. I hope I'm able to clear. Normally, one kammatthana should be taken for practice, and one that should be chosen carefully. Okay, according to one's temperament, according to one's nature of defilements, and since these keep on changing, you know, so when a very strong defilement arises, for example, of lust arises because of whatever reason, then it's better to switch, and you work on that for some time. It depends on कि कोई चीज अगर बहुत गहरी हमारे भीतर आ रही है, तो भगवान ने कहा भी है ना, सती पठान के
धम्मानुपश्यना सत्र में कहा गया है कि कौन सा निवरण उठ रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करके पता करो क्या कॉज है, और जब वो कॉज पता चले तो उस कॉज का निवारण कर दो अकॉर्डिंग टू द फोर नोबल ट्रूथ्स, isn't it? Tanha has, you have to recognize the cause of suffering and then drop it. तन्हा होगी किसी तरह की, अब वो काम तन्हा है कि भव तन्हा है कि सीईओ बनने की तन्हा है कि एनलाइटन होने की तन्हा है, डिपेंडिंग ऑन दैट we'll have to appropriately use the method of meditation. If it is getting very strong and not allowing meditation, or not allowing stability of the mind, not allowing serenity to come in, basically there should be a level of serenity in the mind, and we should be able to live in peace. If these minor fluctuations will always happen, unless till such time as we don't become arahants, this is going to happen. But if there are major fluctuations, हमारा दिल मतलब बिल्कुल टिकता ही नहीं, हफ्तों महीनों वही विचार आया जा रहा, then we handle that. Then we apply that particular method of kammathana till we are उस गहरे संस्कार से हमारा मन शांत हो जाए, उसके शमन हो जाए. जब वो गहरा संस्कार शमन हो जाए, then we can change another sammathana. That is for the when we have very strong sankharas. If it's not there, if sankharas are moderate intensity, then we can choose one. Say these breaths or body sensation or open awareness, whichever way. For open awareness, again, you require a much stronger samadhi. Otherwise, it will be very difficult. So depending on the state of mind, depending on the conditionality, appropriate kammathana should be chosen. That's why a suitable Kalyan Mitra is very helpful. Consulting a Kalyan Mitra on the need for a kammathana or need for a change is very helpful. I think so. मैं अपनी clarification के लिए कि जो मैं समझती हूँ, जैसे आपका kammathan means that you are coming back to your breath and whatever situation is right, whatever methodology you use, आप four noble truth भी कर सकते हैं, सत्तिपट्ठान भी हो सकती है, आप जो मर्जी करें, लेकिन but जो आपका breath is the main, you come to that point again, back to that. So similarly, I was understanding कि जैसे अपमान समाधि करेंगे तो भ्रम विहार होगा, तो that means we will have, you will come back to your priti and you will come back to maitri, you will come back to your, so चारों ब्रह्म विहार के एक कोई भी एक pick करके, then you'll come back to that. Why should you do maitri? When should you do maitri especially? One is the daily practice. That is always perfect. Other is using metta as a kammathana. That is done when you have a strong tendency of aversion. Then we should use it ताकि हमारा aversion कम हो जाए, मैत्री उसकी जगह ले ले. उस sense में करना चाहिए. So that means kammathana also will change. Yeah. According to the. Yes. For doing immeasurable apaman samadhi, that's a pretty advanced stage of practice. It should be done under guidance of a proper teacher. Okay? Right. Thank you, sir. सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था. हाँ जी, पूछिए. तो जैसे आप समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, जैसे सांस का आलम्बन ले लिया आपने या बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर संवेदनाओं का भी आलम्बन आपने ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन किया, लेकिन आप सांस को भी जाने जा रहे हैं और साथ में कुछ विचार भी आए जा रहे हैं, कुछ पास्ट मेमोरीज भी आई जा रही हैं, तो क्या वो समाधि का अभ्यास हो रहा है या सांस भी जाना जा रहा है और वो थॉट्स भी आए जा रहे हैं, वो भी देखा जा रहा है? अगर आप थॉट्स आ रहे हैं और मन को फिर वापस सांस पे ला रहे हैं बार बार, तो सांस ध्यान कर रहे हैं. जैसे आनापान पब्बम में भगवान का जो आनापान पब्बम का समाधि का इंटरप्रिटेशन है वो इस तरह से है कि हम सांस को देख रहे हैं, सांस आ रहा है जा रहा है, मन में कोई विचार आया, हमने देखा वो मन भटक गया, and we smile, oh, mind has gone back, and relax the mind and bring it back to the samadhi, to the object, that is the breath. So when we constantly bring back the mind to the object of meditation, then samadhi will get fulfilled, certainly, very strongly.
Now, if our samadhi is fulfilled and we are practicing according to Anapanasati Sutta, then we practice first from the point of view of Anapan, from Kayanupassana point of view, then from Vedananupassana, जो हमने किया था ना Anapanasati Sutta में. So that actually means you are doing the practices of Satipatthana, but keeping the object of breath always with you. So my experience has been that when we do the object of breath constantly with us, the mind remains quite, serenity bani रहती है. So you can say to that extent, the samadhi bani रहती है. So it helps when we are handling the, and of course, if you are doing open awareness, then everything is okay. Then it presumes कि आपकी समाधि इतनी strong है कि सांस को भी देख रहे हैं. जब सांस स्ट्रांग है, सांस को देख रहे हैं. मन में विचार आया तो विचार को जान रहे हैं, और उसके जाना कि ये विचार आया, उसको देख रहे हैं. जब वो समाप्त हो गया तब तक उसको देख रहे हैं, और फिर वापस आ गए नेक्स्ट इवेंट पे. सो देन यू आर कीपिंग योर अवेयरनेस नॉट टाइड टू एनी पर्टिकुलर कम्मठाना. whatever is the prominent one, you are operating on that. So that is another, the open awareness approach of meditation. सर लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, सांस भी जाना जा रहा है, संवेदना भी जानी जा रही है, और जैसे थॉट्स एक पिक्चर चले जा रही है बैकग्राउंड में, वो भी जाना जा रहा है. सांस का आलंबन नहीं छूटा है, मतलब कि सांस भी जाना जा रहा है. तीनों चीजें मालूम पड़ी, और कभी कभी कोई इमोशन भी आ गया, वो भी जाना जा रहा है. तो वो क्या मन समाधिष्ठ है उस समय पे या नहीं? कुछ हद तक तो है ही है, कुछ हद तक तो है, बट पूरी तरह नहीं है, क्योंकि मन जो है एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है ना. क्योंकि वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक चीज पे टिका रहे और बाकी चीजें भी देखता रहे, ऐसा होता नहीं है ना. मन में हमेशा एक ही चीज एक टाइम पे आती है. तो जब हमको लगता है ऐसा साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, सांस को जान रहे हैं एक क्षण के लिए, दूसरे क्षण संवेदना जान रहे हैं, तीसरे क्षण उसको जान रहे हैं, मेंटल स्टेट को या इमोशन को, फिर सांस पे आ जाते हैं. तो मन जो है फ्लिप कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, बट द रेट ऑफ फ्लिपिंग इज प्रीटी फास्ट, एंड देयरफॉर हमको लगता है कि सांस को भी जान रहे हैं और बाकी चीजें भी जानी जा रही हैं. सो क्योंकि मन फ्लिप कर रहा है एक से दूसरे में, then the samadhi is not going to get strengthened. Yeah, it presumes that you already have a reasonable level of samadhi and you are able to, it's almost like a open awareness. इस तरह की practice जो है, it is like open awareness, you can say. फिर क्या करना क्या चाहिए? जो आपको ठीक लगे. If the mind remains calm and quiet and it gives you, what is the objective? The objective is to practice awareness and to see the arising and passing away of phenomena. Is perfectly fine. Then there is perfectly fine. You can see then focus should be on seeing the arising and passing away of phenomena. That should be the focus rather than the objects. तो अनित्य बोध को पुष्ट करना है. तो देख रहे हैं, अरे अभी ये ऑब्जेक्ट से देखो बदल गया, अभी जो है काया विज्ञान चल रहा था, अब मनोविज्ञान चल रहा है. अब शब्द कान में आवाज सुनाई दे रही है तो श्रोत विज्ञान आ रहा है. See how fast they are changing, so we understand these are all constantly undergoing a change. अभी वेदना प्रिय थी, अभी अप्रिय हो गई. अभी सांस तेज था, अभी हल्का हो गया. So you're constantly focused on impermanence, anicca, 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 and then slowly we can go back from the content of the mind to the awareness. So it is a constantly an awareness, and all these phenomena are happening. It's like this sky of awareness in which the clouds of various events are happening. ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. So when you get into that, that's a pretty advanced level of practice. Then we are able to disassociate ourselves from the object of awareness. We are getting more and more established in the awareness. That is what Lungpo tries to teach us to practice. मैं जरा पूछ रहा हूँ जैसे अनिश जी का प्रश्न सवाल हो, जवाब मिला कि नहीं? नहीं, मैं एक मन ये कहता है कि ये जो आप कह रहे हैं ओपन अवेयरनेस, मन बहुत शांत हो जाता है उसमें, एंड इट्स वेरी काम, जो वेरी शांत है मन. लेकिन फिर ये ऐसे एक
क्योंकि एक पास्ट इतनी मेडिटेशन की हुई है कि ध्यान की निरंतरता बनी रहे, ये मतलब तो ऐसे लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो मतलब कि सांस देखते देखते, अच्छा, so it's sometimes this thought does come up that why is things coming into the mind, past memories are coming, and that is because of sankharas, of course. yeah, चित्त में अनुशय क्लेश है, राग का संस्कार है, द्वेष का संस्कार है, मोह का संस्कार है, दे आर कमिंग अप अगेन एंड अगेन. साधना में चित्त का शांत होना अच्छी बात है, बट वो हमारा उद्देश्य नहीं है. अल्टीमेट उद्देश्य, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है कि जो हो रहा है हम उससे डिस्पैशनेटली देखें. वी जस्ट मूव आउट ऑफ द व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट. वी कम टू द position of the pure awareness which is observing whatever is happening. That is the objective. Even if the whole mind is getting topsy-turvy, but we are stationed in the awareness, perfect, साधना perfect हो रही है. So शांत होना मन का अच्छी बात है, but उसको फाइनल ध्येय नहीं मानना चाहिए साधना में. Yes, राजेंद्र जी. हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे जब हम ध्यान पे बैठते हैं और आनापान से शुरू करें और उसके साथ ही फिर कायावासना करके और उसके बाद फिर हम चित्त वासना और इसके साथ ही फिर हम ओपन अवेयरनेस, ये चारों चीजों को एक सिटिंग में कर पाएंगे क्या? हमें क्या लेना देना है यार. हमको क्लियर होना चाहिए हम करना क्या चाहते हैं. हम करना ये चाहते हैं कि हमारा ध्यान पूरी तरह से लगे, कोई भी चीज जो भी हम कर रहे हैं. उसका क्या मतलब है? ध्यान पूरी तरह लगने का क्या तत्व है? ध्यान का मतलब ये है कि जब मैं विचारहीन हो जाऊं, मतलब मुझे विचार नहीं चाहिए. ये तो इट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. देन आई एम सॉरी. विचार तो आते रहेंगे, आपका कहना है? नहीं, विचार नहीं तब होंगे जब मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा. अदरवाइज तो मन शुद्ध होगा जब मेरी समाधि दृढ़ होगी, तो जाहिर है कि फिर मेरा मन भी तो शुद्ध होगा उससे. नहीं होगा. ठीक है, मेरा शील वगैरह सब जो है वो सब that is taken care of. तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, समाधि से शील, चित्त गहराई से शुद्ध नहीं होता, समाधि से सप्रेशन होता है. यू टू अंडरस्टैंड दैट सर. हमको क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मन हमारा एकाग्र. अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, बहुत ज्यादा भटक रहा है, तब तो हमको समाधि का अभ्यास करना ही चाहिए. Then forget anything else. Practice samadhi, observe the breath, and when the mind wanders away, bring it back. Wanders away, bring it back. Make it strong so that it stops there, and then you can observe the breath for long periods of time. तब समाधि strong हो जाएगी. तो दो एस्पेक्ट है ना प्रैक्टिस के. एक एस्पेक्ट है समाधि का, दूसरा एस्पेक्ट है प्यूरिफिकेशन का, इनसाइट का, विपश्यना का, जो भी शब्द यूज कर लीजिए. तो एक दोनों ही इंपॉर्टेंट है. उसके एक के बगैर दूसरा हो नहीं पाएगा. मैं वही समझ रहा हूँ कि समाधि जो है जी, पहले मैं समाधि को पहले प्रबल बनाऊं, उसके बाद मैं सती लगाऊं. प्रबल बना. समाधि दोनों के दोनों जो है प्रबल ग्लोव्स हैं. प्रबल का क्या क्राइटेरिया है? प्रबल का क्या क्राइटेरिया? कब आप कहेंगे कि मेरी समाधि प्रबल हो गई? कब? व्हेन विल यू से दैट माय समाधि इज प्रबल? व्हाट इज द क्राइटेरिया? Criteria is mindfulness, that I am completely aware about the thing which I am doing. If I am doing my meditation, mindfulness means you are aware of whatever is happening. Yes. Even if mind is wandering away, if mind is wandering, fine. If it wanders away, I come back. You are aware. I know that I am wandering. I know that मेरे thoughts आ रहे हैं. Yeah, you will know. That is what I am saying. Everybody. मैं खो नहीं रहा हूँ thoughts में. हाँ जी. मैंने कहा कि thoughts में खो नहीं रहा हूँ. Thoughts आ रहे हैं, but I am aware कि ये thought आया है. Now I have come back to. तो मैंने ये personally feel किया कि unless until one has a strong samadhi, it is not possible. Am I right or wrong? No. Had it not been possible, why would I speak? यार, मैं आपसे जैसे आप गृहस्थ हैं वैसे ही मैं गृहस्थ हूँ. जिस तरह की परेशानियां आपको मालूम है वैसे मुझे भी है. So there is no issue at all. That is not correct. That is a defeatist attitude. Why? How do you say that? Not at all. You can always become calm and quiet, and you can always have strong agitation in the mind.
and observe it, and it calms down. Perfect. So we don't have to keep a wrong aspiration. रॉन्ग एस्पिरेशन रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. तो समाधि भी तो मतलब you have to have clarity. समाधि का मतलब क्या है? आप पहला दूसरा, समाधि का मतलब है that concentration. कितना, अंग्रेजी में कितना कि मैं जो कर रहा हूँ वो पूरी तन्मयता से कर रहा हूँ. कितनी देर, That is what समाधि is. कितनी देर? It's not a straight forward question, ना. समाधि का इंटेंसिटी होती है भाई, इंटेंसिटी. There is खनिक समाधि, उपकार समाधि, अपना समाधि, प्रथम ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा, ये 8वां ध्यान. So many grades the Lord has told us. So if I am sitting for 1 hour, जी, and in that I want कि मेरे को पूरी तरह से concentration रहे. पहले तो वांट को आप हटा दीजिए. अच्छा, वांट को हटा दिया, ठीक है. Okay. That it's a very important thing. Kindly don't think that I am just trying to play with the words. It's actually ठीक है, ठीक बात है, समझ गए. And then you have to see that, okay, what is this when you sit, whenever I sit, for example, I must sit quietly and then see what is the state of my mind at this moment, state of my body. मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बुखार है, कमर में दर्द, बिकॉज बूढ़े आदमी हैं, कमर में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, देख लो. अच्छा, बेचैनी हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गई घर पे, कुछ बहुत शोर शराबा हो गया. ओके, लेट मी सी. सो आई देन सी क्या स्थिति है, देन आई रिलैक्स. फर्स्ट थिंग इज आई जस्ट रिलैक्स द बॉडी, रिलैक्स द माइंड. एंड इफ देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रांग थॉट का प्रोसेस, आई से ओके, this thought very important, for 1 hour please be away, no more. I'm not going to get into it. I'm not discussing you, I'm not thinking about you. So I have to speak to myself, this thought is away for 1 hour. Now I sit with the determination, okay, and I start. Suppose I want to practice anapana and practice samadhi for some time. I sit and say, okay, I will now practice samadhi for 15 minutes, 20 minutes, half an hour, 1 hour, whatever I want, I decide. How do I decide? Based on the state of my mind. If my mind is very agitated and moving left and right, not steady at all, I practice for 1 hour. Beautiful. So I just observe. If I see, nahi, meri samadhi to bilkul badhiya hai, okay, then I'll bring the mind into harmony, in serenity for 5 minutes. And then I say, sit quietly. Okay, let me do the body scan. No, let me do the open awareness. Today samadhi is very good. Let me see what's going on. Okay, sound is coming. Wind, the fan air is hitting the body. There is pain in the body. Thoughts are coming. I'm observing. I'm seeing they're arising, passing away, arising, passing away. Fine. So I'm developing my Panya of Anicca Sanya, Panya of Anatta Sanya, and Panya of Dukkha Sanya. That is what I am supposed to do. That is the purification process. It doesn't mean that thoughts will not come. Yeah, thoughts will come. Then only sankharas will arise. And only when the mind really calms down, sankharas will substantially come down, then you come to a state, yeah, I sit, no thought, 1 hour, sit straight. No issue. Mind of breath observation, body observation, this observation, whatever is happening, I am observing, including thought arising, I am observing, but it just goes off like this. It arises, passes away, arises, passes. It doesn't do me any wrong. So that's all. But that will need proper practice in accordance with the state of the mind and clarity about what I want to do. I want to raise my concentration, then do that. I want to now practice purification of mind, then do that. So that's the way I practice. You must kindly reflect on it, and then if need be, we can discuss again. No problem. Thank you. Thank you. Sir, I have a question, sir. Anji. Now, see, from 3 days you were explaining Samadhi, Samma Samadhi, which is basically with the Eightfold Noble Path, and Sutta,
different explanation you have given. And in continuation of what Anishji spoke about it, one-pointed concentration. जो आपने बताया था, just khanik samadhi is not sufficient. You need to reach a level of arpana samadhi if you want to get liberated. और एक तरफ में है कि you have to just watch the arising and passing away phenomena. Even the thoughts will come, whatever is coming, you just do nothing, you sit and watch. So what in all these three, does it all three lead to a goal of liberation, understanding anicca, dukkha, anatta, or what is it like one should do? Because then I'm slightly confused whether you should just concentrate on one pointedness, and then when you have a certain concentration, jab aapki pushed ho jayegi, then there is a possibility of sankara coming to the surface, from surface level, so that it gets eradicated. Is that what? Because ultimately the goal is to observe all the three characteristics. Uske liye hame, I mean, what kind of a thing we need to develop? What kind of Samadhi is required to develop? Is it like, because you've given different examples, तो समाधि का मतलब है चित्त का समाहित होना. आपको जिस तरह से समाहित कर सकती हैं उस तरह से करिए, ठीक है ना. ऑल दिस सर, आपने जो कहा था कि जब तक आप अर्पणा लेवल समाधि तक नहीं पहुंचोगे, ऐसा नहीं कहा. आप सुना ही नहीं आपने इसका मतलब. आपने ठीक से सुना है. मैंने कहा था कि जो कमेंटेरियल लिटरेचर है उसमें कहा जाता है कि खनिक समाधि सफिशिएंट है to start practice, which is true. To start practice, it is sufficient. But if you want to really make a dent in our strong dent in our samadhi, in the reduction of impurities, then my experience, it may not be yours, but I'm just sharing my experience, is that if we come to upchar samadhi, then you can really practice very good. Well, practice very good in the sense that mind will not keep on running here and there, unless you allow it that freedom. You can allow it in open awareness, we allow it that freedom. That's fine. I repeat again, you need to practice samadhi so that it is at least a few minutes, 10 minutes tak man ek alaman pe tik sake. I'm just giving a specific example because of my practice. It's not written anywhere in a book or anything. It all depends on everybody's practice. Some people will say 2 minutes is sufficient. Some will say 20 minutes is required. So it all depends. Everybody has to decide for himself what is sufficient for him. You see, that is a very important thing. That's why the need for a personal friend with whom you can interact. You have to find out for yourself how much samadhi I need and not get carried away by the benefits of samadhi. And then you have to see that the whole main idea is to purify the mind, which is to develop panya, which is to see the three characteristics, for example. You can work in that manner, seeing the anicca, dukkha, anatta, developing those various sannyas, whatever sannyas we have spoken of. All those sannyas are necessary depending on the mental construction. If somebody has a very strong sankhara of lust, he has to practice Ashubha sanya or Adinava sanya or the Navasvitakara Pabham, that perception of the Marana sanya, you can say, put it in that manner. If the lethargy is too much, then again Marana sanya may be helpful. So one has to see मेरा mind की state क्या है और किस तरह से मुझे practice करनी है. उसका कोई solution नहीं है. You cannot have a one straight method कि ये कर लो, सांस को देख लो, फिर शरीर को देख लो, सब कुछ हो जाएगा. ऐसा मेरे अनुभव में नहीं होता है. That's what I'm saying. You have to see what is the state of your mind and depend. That's why all that discussion इतना क्यों कर रहे हैं हम? मैं आपको क्यों परेशान कर रहा हूँ? 10 संज्ञा बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ. इसीलिए बता रहा हूँ कि वो उसके करे बगैर काम नहीं होगा. अगर आवश्यक है तो वो करना पड़ेगा. अगर संस्कार कोई स्ट्रांग है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एंटीडोट यूज करना पड़ेगा. और अगर संस्कार ये इंटेंसिटी स्ट्रांग नहीं है लेकिन डेप्थ स्ट्रांग है, तो देन यू हैव टू प्रैक्टिस. अराउज पास अवे, अराइजिंग पासिंग अवे. मैं बार बार कोट करता हूँ अजान अमरो को. उनकी एंजाइटी का संस्कार इतना गहरा था कि उनको पता ही नहीं चलता था कि संस्कार गहरा एंजाइटी है भी कि नहीं. एंड ही वर्कड ऑन इट फॉर 2 years. Kindly understand, a monk of that caliber
constantly working. 2 years, more than 2 years it took him. What he did, he would first calm down the mind. That's all what everybody has to do. First calm down the mind, and then, okay, this sankhara has to be handled. Anxiety sankhara has to be handled. You sit and do some practice, or anxiety arises. If it doesn't arise naturally, you force it to arise by remembering past event and see its arising, see its standing, see its cessation. Arises, stands, cessation. Arising, standing, cessation. Again and again and again. Then the sankhara will come down. उसकी जो intensity है, उसकी जो energy है, वो कम होगी. ऐसा करना पड़ेगा. कोई चारा नहीं है उसमें. If you want to really purify the mind and enter the stream of liberation, you see, those have to be done. So one has to identify कौन सी चीज मेरे को, मेरा संस्कार कौन सा कह रहा है. आप ये नहीं कह सकते एक तरीका बता दीजिए मैं वही कर दूंगा. ऐसा नहीं हो सकता. No, sir. What I wanted to understand is, I'll just put it across. Like, if you have to reach the Shrotapati Phal or Mag, then we have to, and so just Khanik Samadhi, the normal thing what we do in Vipassana is enough. Khanik is enough for Vipassana to start. But if you have to progress and enter the Shrotapati Mug and fruit, then is it possible that we have to reach the level of concentration for a long time, is what I just wanted to understand, so that the 5 nivrans are suppressed. Yeah, of course. 5 निवरण सप्रेस नहीं होंगे तो आगे काम ही नहीं हो पाएगा. समाधि भी नहीं हो पाएगी, पन्या भी नहीं डेवलप होगी. अगर 5 निवरण ही भी बार बार उठ रहे हैं तो समाधि कैसे डेवलप होगी? So in short, if I have to understand it, then just a 1 minute, or so basically the samadhi has to be for a long time, so that the thoughts also doesn't come and distract, or the emotions also doesn't arise. Is what my understanding is? Yeah. Just correct me. Yeah, that long time is how much time? What have you understood by long time? What will you call as a long time which is sufficient for you? Where your mind becomes calm and serene to a certain extent. What is that certain extent? Where there are no defilements which arise in our mind, basically. Will that happen when, as long as there is latent tendencies of that kind? It will happen for all times to come. कितनी देर तक होगा ये देखना ना. One has to assess for oneself. हमको अपने आप को assess करना है भाई कि मेरा मन शांत हो गया और अब 5 मिनट 10 मिनट मेरा मन टिक जाता है, मन में कोई निवरण नहीं जागता, तो मेरी समाधि पुष्ट हो गई है. Now I am fit to start practicing the purification of my insight meditation, vipassana, जो भी आप कहना चाहें. Now I can practice, which means either want to open awareness or body scan or anapanasati sutta or whatever. Then the focus will be on anicca, dukkha, anatta. Focus is on that. Is it clear? Firstly, focus is on samadhi. Then with that samadhi का purpose यही है कि हम पन्या को डेवलप कर सकें, है ना. तो पहले समाधि उतनी डेवलप करेंगे जिससे हमको अपने एक्सपीरियंस से लगे कि हाँ, मेरा मन अगर ऐसा मुझे लगता है कि अब टिक शांत है मन और टिक रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं भटक रहा, ओके लेट मी ट्राई इट आउट एंड प्रैक्टिस ओपन अवेयरनेस. आई प्रैक्टिस इट एंड फाइन नहीं हो रहा, भटक रहा है, ओके आई डू प्रैक्टिस समाधि मोर. It always happens. That's how we do. Even in long courses, we used to do like that. We practice आनापाना raised. मतलब 10 दिन आप सब आनापान कर रहे हैं, उसके बाद भी जब ऐसे ही आप विपश्यना शुरू करते हैं, माइंड फैल जाता है, अटेंशन 5-10-15 दिन में, फिर अटेंशन 5-10-15 दिन को 5-7 दिन में मन भटकने लगता है. Okay, then we again practice आनापाना, strengthen the mind, then again do vipassana, then again practice for some days, then again do. जैसे जैसे संस्कार जागते हैं उनका शमन होता जाता है, चित्त शुद्ध होता जाता है. कभी बहुत गहरा संस्कार जाग गया तो एकदम मन को उठा के हिला के फेंक देगा. Then you have to practice आनापाना for long time. So one has to have that clarity कि मैं क्या करना चाहता हूँ उस समय. That is, वो हर एक साधक को, हर एक साधिका को अपने अंदर इतनी क्लैरिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई अब मुझे कौन सी साधना करने की जरूरत है, अब मुझे समाधि पुष्ट करने की जरूरत है कि मुझे चित्त शुद्धि का काम करने की मैं सक्षम हूँ. तो वो मुझे देखना पड़ेगा ना. हर को साधक को अपने आप देखना पड़ेगा कि मेरी समाधि इतनी पुष्ट है कि अब मैं 15-20 मिनट तक बड़े आराम से
I can practice purification of mind for another 30 minutes. And mind is not going here and there too much. And maybe it happens after 10 minutes again, some big sankhara arises of some huge memory, something hidden. Okay, then my mind has gone again haywire. Okay, again I practice Anapana for some time. Again raise the samadhi. Kya ho raha hai? We are getting trained in how to handle the mind. That is the key thing. We don't have to put artificial standards, you see. We have to see what is my mindset, and depending on the state of the mind, I start my practice and then keep on changing, shifting from one to another, depending on requirements. Sir, I will just share my experience, the way I do it. Sometimes if I don't feel like scanning the body or open awareness, I just sit and observe the breath. Or sometimes I practice Anusati also if my mind is really disturbed. I start with that. So that also, like आपने जो mention किया था, like Karuna, Metta, and all that also is part of the Samadhi process. So you can actually do it according to your requirement. What is the state of the mind, basically. Yeah, that's what should be done. That's what I'm saying again and again. अगर मन में बैठे हैं आप और आपके मन में बुरी तरह से किसी के प्रति द्वेष जाग रहा है, तो आप क्या साधना करेंगे? पहले first practice metta. There are many teachers who say first thing you should do is to practice metta, then you do anapana, then you do samadhi or do vipassana, or you do from metta you go to vipassana, whatever you do. First thing you do is metta, because अधिकतर लोगों के मन में द्वेष ही द्वेष भरा हुआ है, तो मैत्र से शुरू करो. Perfectly fine. So one has to determine ना, मेरे को देखना पड़ेगा ना मेरा मन कैसा है. अगर मन में कभी उछाल हो जाए, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया किसी बात पे लेके, so definitely we should practice metta first. Certainly, very right, perfect. Sir, in this मन में बहुत दुख हो रहा है. वैसे बीच में जब मेरे इतने फ्रेंड्स की डेथ हो गई, mind was getting so upset with sadness, and so I used to practice karuna for a long time. So mind gets calmed down, then you practice. So जो आवश्यकता है वैसे साधना करनी चाहिए. इसमें मन पूरा फैल जाता है सर. Like then क्या फर्क पड़ रहा है हमको? क्या फर्क पड़ रहा है हमको? How does it matter? We have to learn to handle the mind. मन फैलना नहीं चाहिए, मन सिकुड़ना चाहिए, मन ये होना चाहिए. क्यों होना चाहिए भाई? मन शुद्ध होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. मन बेचैन नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स मत रखिए ना. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द साधना, किस लिए कर रहे हैं? दुख मुक्ति की साधना है. चित्त फैलना नहीं चाहिए, किसने कहा आपसे? व्हाट डज इट मीन चित्त फैल रहा है? आर यू प्रैक्टिसिंग एंटायरली? इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर jhana, I can understand. But if you are practicing as a normal householder, trying to purify the mind sequentially, then we switch between samadhi and vipassana as per requirement. And samadhi can be done in variety of ways. That's why the need I mentioned about those samadhis. Of course, the name is immeasurable, but you don't have to take it to hold on to that. Metta is practiced when the mind में aversion बहुत ज़्यादा. You practice metta ताकि मन शांत हो जाए. मन का शांत होना, serene होना आवश्यक है concentration के लिए. अगर मन बेचैन होगा, concentration नहीं होगी. This is a prerequisite. We have seen, no? We have to have pramoja, then you have to have the happiness, and happiness is the proximate cause for concentration. So why are we studying all that? So that we derive a proper understanding of the method of meditation. इसीलिए तो इतना study कर रहे हैं. So kindly try to get at the point which is being made through these discussions and reflections. Why am I talking of 10 sannyas? Because I may sometimes need Ashubh sanya, sometimes I may need Maran sanya, sometimes I may need to work on Sabba Loka Anavirati sanya, because I'm getting so much attached and attracted by something in the world, or so much repelled by something in the world. The behavior of politicians is repelling me too much. So I didn't practice this, then this. I'm not supposed to be, I'm not the arbiter of this world and setting it right. So I have to come out of that megalomania of thinking that I'll set the world right. So they are the practices. तो ये सारी संन्याय practices हैं हमारे लिए अपने चित्त को समाहित करने की और फिर चित्त को शुद्ध करने की. So we should see them in that light and understand them so well that we know इस समय ये करने की आवश्यकता है. वो अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है हमको हर समय. इस समय जब भी ध्यान करने बैठे, इनफैक्ट
जब हमको तो 24 घंटे ध्यान करना है, जब भी मन की जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से हम अपने मन को संभालेंगे, मन को संभालेंगे ताकि मन को हमको जहां चाहे वहां ना ले जाए, हम जो चाहे मन को कर ले. वी बिकम, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द समाधि ट्रूली. चित्त समाहित है, जो काम हम चाहें वो करे, हमारे कहने के हिसाब से करे. That's the key thing, isn't it? So we have to see the interconnection between all that we have been doing for last 2 months. Or kindly reflect on that, okay? And you're always welcome to ask more questions, no problem. No, so what I meant was man fail jata hai. What I meant was like when you do vipassana or when you do body scanning, so then it is not one-pointed focusness. I was referring to that. Why do you want one-pointed focus? Why No. See, one-pointed focus is required for your mind to calm down to a certain extent, so that it is. You're purely, please practice and see what happens. If what I have explained is not clear, please contact me again, okay? Please practice accordingly and see. Don't get into theoretical discussions. When we practice body scan, the samadhi is going to fall, definitely. But it depends on how well you do. It may not, the rate of fall will depend on how well you do that. Now, I can't tell you that how much rate will be there, isn't it? It depends on your practice. So you have to assess. You have to assess when you are doing body scan. Suppose you have to assess. अब मेरा मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है भाई. अब आनापान करो, मन को समाहित करो. That every meditator has to assess for himself. Nobody can tell. No teacher can tell, unless he is a Buddha and he can see your mind and tell you. Nobody can tell. Nobody can tell you what is to be done. I have to find out for myself. कि अब मेरा मन बहुत भटक रहा है, ओपन अवेयरनेस वगैरह कुछ नहीं होने वाली है मेरे से. ये चुपचाप बैठ के सांस को देखो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वही करो. So that is the appropriate action to be done. It's not a regression हो गया, अरे मेरा मन तो फैल गया, अब तो मेरी तो साधना खराब हो गई. No, not at all. That is the correct sadhana. At every moment, a certain correct sadhana has to be done. That's it. Is it clear? If it is not, I'll seek permission of Anish to clarify this point, because इतना effort हम कर रहे हैं, तो अगर ये basic बात clear नहीं होगी तो it will be a bit sad for me. So please tell me, ask me again and again. If it is not clear, please ask, no problem. No, sir, it's clear. Thank you. Don't worry, don't feel shy or hesitant. Because whole idea is that we become clear of our practice. हमें कैसी साधना करनी चाहिए, वो basic idea है ना. सर, बहुत ही अच्छा ढंग से आपने ये क्लैरिफिकेशन किया है. जो हमारा एक्सपीरियंस रहा सर, कि आपने जैसा कहा कि जब अपन मेडिटेशन में बैठते हैं, विपस्सना में बैठते हैं, जब तक अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है तो आनापाना ही ज़्यादा मतलब उपयुक्त हो जाता है सर. और जब स्ट्रांग मतलब अपना मेंटल स्टेट बन जाता है, विचार आना बंद होता है, देन वी स्टार्ट मतलब माइंड एंड बॉडी के साथ में वी जस्ट मूव अलॉन्ग विद दैट एक्चुअली. तो ये तो सबसे मेरा जो बेनिफिट हो रहा है सर, मतलब कि एवरीबॉडी विल एक्सपीरियंस ये 1 घंटा 2 घंटा करना, ये तो दिस इज गेटिंग द बेसिक स्टेबलाइजेशन. लेकिन सर डे टू डे मतलब हम जब व्यवहार करते हैं, किसी से बात करते हैं, अनहोलसम मैटर आता है, तो उसी टाइम पे भी हम आनापान से साथ में वी कैन कंट्रोल द रिस्पॉन्सिंग टू द सच सिचुएशन, और वो भी हम मतलब वी कैन डेवलप द कंपैशन अबाउट दैट सिचुएशन. तो वो सबसे लाइफ में ज़्यादा मतलब स्टेबलाइज बन जाता है सर. So this is my experience. I am just sharing, sir. Good, very good. Professor Dhar, do you still have time, or do you think you're tired now? I'm not tired, but we have to get permission of Anish. No, sir. Please go ahead. So I have shorten the meta session if necessary, but these question answers are very important, sir. हाँ जी, बताइए जी, सुरेंद्र प्रशांत जी. 2 छोटे क्वेश्चन है. छोटे तो आप डिसाइड करेंगे कितना छोटा है कितना बड़ा है. But and the first one is not directly related to what we are discussing just now, but just to understand
the difference between manas and chitta, because both these words are often used in our discussion as well as in the suttas. So, and also, how does pure awareness relate to these two, if there is any relationship? Does this question make sense? And if so, if you can kindly clarify. It's a question regarding theory, and I'll therefore give a try to give a precise answer in the short one. The idea of pure awareness is not a part of orthodox Theravada tradition. We must be very clear on that. Okay. Then what the Thai forest tradition masters describe as pure awareness, they call that as the chitta, which means the chitta is the ability to be aware, just to know. One who knows, or the knowing ability. And they say this ability is outside of five khandhas, which is a very major departure from orthodox Theravada tradition. Manas is generally used. Again, it is used very loosely by different people. Generally, it is used as the faculty of thinking. Just as eye does the seeing, nose does the smelling, manas does the thinking. That's it. So manovinyana means the thinking process is happening. Okay, it makes sense. So that when we talk about chitta sankhara, that is a different thing. And when we talk about chitta in the context of pure awareness, that's a very different thing. Yeah. Okay. In chitta sankhara is a part of orthodox Theravada tradition, which means what are the factors which give rise to the phenomena in the chitta. And therefore, the chitta sankhara is defined as perception and vedana, because these are the two things which will give responsible for the thoughts to arise in the chitta and everything else to happen. Okay. Hello. The second question was relating to what Deeptiji was saying earlier, as to what is being said in the suttas and what is being said in the commentaries regarding the level of basically when you shift over to contemplation. And so I think probably when Buddha used to talk mostly of jhanas, that's possibly because he was always talking to the monks, people who are practicing day by day, day and night, so they can actually go into those. And I think in one sutta, he even says that first you come to the fourth jhana and then you have the theme ready for contemplation and then you get into that contemplation. So maybe the suttas are mostly referred to the situation that Buddha was handling with respect to the expert meditators like the bhikkhus, whereas probably those things are not even possible to think for us. The key thing is, which we sometimes we forget, that Buddha's teachings were directed to the audience, independent on the person sitting there. Even among bhikkhus, there will be wide variation and he would give different instructions. And even among householders, there will be wide variations. And there are suttas in which householders were excelling the bhikkhus. And there are suttas in which Buddha asked the householder Chitta to give a talk to the bhikkhus. So that was because he was such a great master, he could see what is the state of mind of the person sitting in front of him. Any thought arising in the mind, and he would answer that question, and that would become the basis of discourse. There are so many discourses which arise like that. People are sitting and he says, okay, yeah, some person thinks like this, and then accordingly the whole discourse starts. So that is a very so-called perfect master's teaching. And therefore, we have to see what is the generic teaching and what are the special teachings given for, as you are saying, advanced meditators and others. There's no doubt on that issue. The jhanas somehow have been a part of the tradition for those, and at the time when the people have a very large amount of time to devote and they can come to meditation centers or monasteries and practice, then only jhanas can be achieved. It's not easy.
no doubt about that. So, but the concentration levels of the Upachara Samadhi can be achieved. Of course, it takes time. That's true. But since our whole theme of all this discussion is in studying the factors which cause the progress in Dhamma, so we are working with that objective. What are the factors which could give a fillip to my practice and make me move from the kind of a plateau at which I might have come? I mean, I used to feel quite often 10 years ago that a plateau has reached in my practice, and now I'm wherever I am. There's only a possibility of falling down. Going up is getting blocked. Fortunately, that situation has changed after I came in contact with the Thai forest tradition, and I can see that the possibility of making our progress faster exists. So that's why I offered this service to all my brothers and sisters, so that whatever I have known and whatever I have felt, I can share with you. Yeah. Thank you, sir. हेलो सर। हाँ जी। मैं जी.के. शर्मा बोल रहा हूँ। जी शर्मा। इस समय हम लोग यूएसए में हैं, धर साहब, दोनों जने। जी तो नमस्ते। यहाँ पर सुबह के करीब 7:40 हुए हैं यहाँ पर सुबह के। जी। तो कभी कभी मैं सुन पाता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगता है। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो उसमें कुछ पार्ट ब्रेथ अवेयरनेस रहती है, कुछ पार्ट उसमें एंगर भी होता है, कुछ पार्ट उसमें एंजाइटी भी होती है, और कुछ पार्ट सेंसेशन भी होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है। तो
and sisters in India.